Hello friends, my name is Aman Gupta and welcome to my channel Engineer Coding Hub. So in this video, we will discuss about the CRUD operations using Spring Boot, like how you can implement the APIs for CRUD operation in Spring Boot. Okay, so let's discuss about the CRUD operations. So CRUD operations basically means the create, read, update, and delete. So basically, if we want to insert the data in the database or read the data, like get the data and show the data, and basically update, delete. So these are the basically operations or manipulations in that we need to perform. This is called the CRUD operation. Okay, so let's discuss some standard about the APIs, because when we create the CRUD operations, so we need to remember some standards. So if you are a working professional or a student, so you have to follow this standard. These are the some HTTP methods we need to use. तो ये वाले मेथड यूज होते हैं when we create any API. So let's discuss about it. So methods like get, post, put and delete. So कौन सा मेथड कब यूज किया जाता है? इट इज बेस्ड ऑन कि किस टाइप की एपीआई यू वांट टू क्रिएट, लाइक जैसे यूआरएल भी अपन को डिफाइन करने पड़ते हैं, जैसे एचटीटीपी लोकल होस्ट, दिस इज द समथिंग लोकल होस्ट, जैसे अपना लोकल होस्ट पे ही चलता है। जब आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दोगे देन इट विल रन ओवर योर होस्ट नेम पे, जो भी आपका नेम होगा। देन पोर्ट नंबर एंड दिस इज योर एंड पॉइंट। सो एंड पॉइंट क्या होगा? एंड पॉइंट बेसिकली डिफाइन करता है कि कौन सा मेथड रन होगा। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि एंड पॉइंट क्या होगा आपका। ओके, सो लेट्स वी विल सी द एग्जांपल आल्सो। लेट वी विल डू द प्रैक्टिकल, सो इट विल क्लैरिफाई टू यू कि व्हाट इज एंड पॉइंट एंड हाउ एंड पॉइंट डिफाइन की विच कौन सा फंक्शन मेथड रन होगा। ओके, सो गेट मींस बेसिकली यूज होता है गेट ऑल द डेटा। अगर अपन किसी भी टेबल से डेटा लाना चाहते हैं और शो करवाना चाहते हैं, लाइक लेट्स सी कि अपन एम्प्लॉयज मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं एंड वी वांट कि मैं पूरे एम्प्लॉयज का डेटा शो करना चाहता हूँ, कितने एम्प्लॉय हैं और उनका पूरा डेटा। सो वेयर वी यूज द गेट। ओके, एंड गेट अपन सिंगल डेटा के लिए भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन आईडी, लाइक किसी एम्प्लॉय या किसी स्टूडेंट की आईडी के बेस पे उसको उसका डेटा लिख सकते हैं। दिस इज बेसिकली अ पाथ वेरिएबल। तो दिस इज बेसिकली अ पाथ वेरिएबल। तो पाथ वेरिएबल में वी सेंड द आईडी एंड इस आईडी के बेस पे आई वांट द डेटा, कि इस एम्प्लॉय या इस स्टूडेंट का इस आईडी के बेस में डेटाबेस में देखो कि इस आईडी का जो भी एम्प्लॉय या स्टूडेंट है वो आई वांट। सो इट विल गेट द सिंगल डेटा बेस्ड ऑन द आईडी। एंड जैसे कि अब जैसे कोई डेटा, इफ यू वांट टू ऐड सम डेटा, सो हाउ कैन आई ऐड इट? सो बी जस्ट ऐड इट यूजिंग द पोस्ट मेथड। तो पोस्ट की रिक्वेस्ट बॉडी या रिक्वेस्ट परम में वी नीड टू सेंड द डेटा व्हेन वी कॉल दिस एपीआई। जब भी अपन ये वाली एपीआई कॉल करेंगे, सो साथ में अपन को वो डेटा भी सेंड करने की जरूरत है। अभी अपन देखेंगे, अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो सीखेंगे कैसे यू कैन सेंड द डेटा एंड इस डेटा को अपन को डेटाबेस में सेव करना रहता है। ओके, देन पुट, दिस इज बेसिकली यूज टू अपडेट द डेटा। जैसे एग्जिस्टिंग डेटा अपन सेंड करेंगे एंड इट बेसिकली अपडेट इनटू द डेटाबेस। ओके, सो बेसिकली दिस इज बेसिकली अपडेट के लिए यूज होता है, पर बेसिकली स्टैंडर्ड में गेट एंड पोस्ट दो ही यूज होते हैं मैक्सिमम जगह पे। पुट एंड डिलीट नहीं होता है, क्योंकि गेट एंड पोस्ट से ही इनका काम हो जाता है। लाइक अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपन सिंपली यूज पोस्ट मेथड यूज कर सकते हैं। लाइक देख लें कि भाई एग्जिस्टिंग आईडी कौन सी है और उसके बेस पे अपन उसको अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड डिफाइन है कि अगर आपको अपडेट करना है तो पुट यूज करना पड़ेगा। ओके, and last is delete. So if you want to delete any data based on some id, so you have to pass the id into a path variable में आप उसकी id पास करोगे एंड उस id के बेस पे इट विल रिमूव द id। तो उसके अंदर का लॉजिक अपन को लिखना पड़ेगा। दिस दिस इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड कि भाई ये मेथड एंड दिस एंड पॉइंट ये डिफाइन करता है कि कंट्रोलर में आपका कौन सा मेथड चलेगा। ओके, लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द फ्लो। कैसे फ्लो रहेगा, क्या फ्लो रहेगा रेस्ट एपीआई का। सो ये अपन ने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो, जहाँ मैंने बताया कि हाउ यू कैन क्रिएट द रेस्ट एपीआईज। ओके, सिंपल वे में, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। ओके, फॉर क्रिएटिंग CRUD ऑपरेशंस। ओके, सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट इट। सो जैसे क्लाइंट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस की क्लाइंट लाइक ब्राउजर। ब्राउजर इज अ क्लाइंट। जैसे ही एचटीटीपी रिक्वेस्ट आएगी, इट विल कम फर्स्ट कम्स इनटू अ कंट्रोल पार्ट एंड कंट्रोलर में डिसाइड होगा कि भाई किस टाइप की मेथड है एंड व्हाट इज द यूआरएल, व्हाट इज द एंड पॉइंट की बात की थी मैंने। तो जो इसके हिसाब से वो फंक्शन कॉल करेगा सर्विस मेथड का, एंड सर्विस
will internally call the repository like CRUD repository. We will use the JPA, so it will provide the custom query or model query लिखने का वो देती है. Okay, we will see it when we do the practical, so don't worry about it. And this is model. Model is nothing but our entity classes, like this employee है, student है, उसके पास कितना data है. And in this video we will use the MySQL for our database. Okay, so this is our main question. Let's take an example of student. तो अपन स्टूडेंट को लेके चलेंगे, स्टूडेंट टेबल को लेके चलेंगे, एंड स्टूडेंट को ही लेके अपन पूरे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. लाइक दीज आर द परफॉर्मेंस टू क्रिएट अ रेस्ट एपीआई विच एड द डेटा. सो दिस इज अपना कौन सा क्रिएट ऑपरेशन हो गया. क्रेड ऑपरेशन में से अपना क्रिएट वाला ये हो गया, ये भाई अपना क्रिएट ऑपरेशन. एंड दिस गेट्स एंड शो ऑल द डेटा. सो दिस इज बेसिकली अपना रीड ऑपरेशन हो गया. दिस इज बेसिकली अ रीड ऑपरेशन कि अपन पूरा डेटा ला रहे हैं फिर शो करा रहे हैं. एंड अगर अपन फेच करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर आईडी के बेस पे डेटा, तो दिस इज आल्सो बेसिकली रीड. एंड क्रिएट रेस्ट एपीआई विच अपडेट. सो दिस इज बेसिकली अपडेट, आपका अपडेट हो गया. एंड क्रिएट अ रेस्ट एपीआई विच डिलीट द स्टूडेंट बेस्ड ऑन आईडी. सो दिस इज बेसिकली आपका कौन सा हो गया, डिलीट हो गया. दिस इज द इन दिस वे में अपन क्रेड ऑपरेशन इंप्लीमेंट करेंगे. क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. सो ये कई बार इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर कि create operation is nothing but a APIs or some operation which we perform on any specific table. Okay, so let's create the APIs for CRUD operation. Okay, so let's create a project. In this video we will use the Eclipse. तो अगर आप IntelliJ भी यूज कर रहे हैं, कोई आईडी भी यूज कर रहे हैं, तो सिंपल वे में you have to create the project and follow these steps. Okay, स्टेप तो सिंपल ही है, सेम ही है. Okay, let's create a new project. Other section, let's create a Spring Boot starter. Next, okay, you have to create an object. So name is CRUD operation. CRUD operations. Okay, this is a CRUD operations. API, not API. CRUD API. Okay, the CRUD API. And the artifact ID. Artifact ID is this. Okay, CRUD operations chalega. And this package name should be CRUD API. And the next. Okay, so you have to add the dependencies. Like I want the MySQL की dependency चाहिए, because in our case we will use the MySQL database, Spring Pap. Okay, Spring Data JPA, because in this में अपन JPA यूज करेंगे. ओके, Spring Security अपन को चाहिए नहीं. ओके, so these are the simple कि आपको JPA this. ओके, लेट्स, अगर आपको डेव टू चाहिए तो डेव टूल इज बेसिकली व्हेन यू सेव. जब आप भी सेव करोगे देन इट विल ऑटोमेटिकली, तो अपन को दोबारा रीरन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड नेक्स्ट एंड फिनिश. इट्स क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट. ओके, so you can see project has been created successfully. The CRUD operation is our project name, and comes to this src, and this is our main file. Okay, so first of all we need to create the entity class, because अगर अपन यहाँ देखें तो आप उनको अपनी टेबल में ये चार चीज चाहिए. तो टेबल क्रिएट करने के लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई कि एंटिटी क्लास क्या होगी आपका, कि कौन कौन सी एंटिटी में कौन कौन सा डेटा रहेगा. ओके, so let's create the entity class. Come here and right click and create a new class. Okay. Let's create a class, and inside it you just declare a package. So a package का नाम entity. Okay, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, अलग से ही बनाए कर सकते हो. मेक श्योर कि इस वाले जो com.crud api.example
इसके अंदर ही आप पैकेजेस बनाएं। ओके, नहीं तो आपकी एपीआई फिर काम नहीं करेंगे। ओके, सो मेक श्योर कि यहाँ पे अच्छे से कर लें। नेम इज, ओके, सो लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रखते हैं। ओके, next, okay, so this is our entity class, so we need to annotate with entity because this is our entity class. Entity, okay, so it will, when this program will run, then it will automatically create the entity of students name, student नाम से create कर देगी। okay, let's create some data member, private int id, so this is basically our id, unique id रहेगी। Private string, private string name, this is basically name of the student। Private integer age, private string and department। okay, this is basically a department, dpt, as of now के लिए अपन dpt रखते हैं। okay, and it will create this entity class, it will create the internally students table, and then inside this table we have a 4 column id, name, age, and so this is basically our id, so let's annotate with it id। okay, because ये unique रहेगी हमेशा, and name is, and so let's generate the getter setter for it। just go to a source and getter and setter is all generate। okay, it will generate the getter and setter। okay, so let's copy it, okay, and I also want the constructor, so just give the getting generate the constructor using field, select all and generate, this is the constructor। I also want the non-parameterized, so public students, okay, this is the our non-parameterized constructor। okay, this will how we can create the entity, so in this way we can create the entity class। okay, okay, so let's discuss about the application dot properties, because database तो configure करना पड़ेगा। so database configure करने के लिए we need to define some properties in our application dot properties file, because ये internally कैसे create करेगा, कौन सी database में कैसे create करेगा, so वो सब अपन को यहाँ पे define करना पड़ेगा। okay, तो इन लास्ट वीडियो भी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के बारे में, पूरा अपन ने देखा था कि कैसे क्या चीज डिफाइन कर सकते हैं, लाइक सर्वर पोर्ट एंड एट ऑल। ओके, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। ओके, सो फर्स्ट आई नीड टू डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट नेम विच इज ऑटोमेटिकली डिफाइंड बाय द स्प्रिंग बाय डिफॉल्ट, सो दिस इज अवर प्रोजेक्ट नेम। ओके, सेकंड वन इज सेकंड वन इज पोर्ट नंबर। सो ये आपकी मर्जी, आप डिफाइन करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते नहीं करो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 808 पे चलता है। लेकिन इफ यू वांट टू एनी स्पेसिफिक पोर्ट नंबर देन यू कैन डिफाइन इट। सो नंबर केस में अपन 8082 रखते हैं। ओके, एंड दिस वन कि डेटा सोर्स का यूआरएल क्या होगा, लाइक माई एसक्यूएल यूज कर रहा हो, पोस्ट ग्रेज एसक्यूएल कर रहा हो, सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रन ही नहीं होगी, बिकॉज वी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर इन अवर फॉर्म डॉट एक्सएमएल में अपन ने माई की डिपेंडेंसी डाली हुई है। ओके, सो इन अवर केस दिस इज व्हाट इज दिस डेमो इज अ नेम ऑफ डेटाबेस। ओके, सो दिस इज इन माय केस, मेरे केस में डेटाबेस का नाम डेमो। ओके, लेट्स कॉपी इट, here find this, okay, data source url, and another one is this is the basically a data source का नाम सिंपल कि डेमो डेटा सोर्स का नाम है। इस स्कीमा के अंदर भी यू नीड टू क्रिएट द टेबल, तो स्प्रिंग इसके इंटर्न अंदर जाके टेबल क्रिएट करेगा स्टूडेंट नाम की, व्हेन विल रन दिस प्रोग्राम। ओके, सो दिस इज बेसिकली यूजर नेम कि आपका यूजर नेम क्या है, बिकॉज यूजर नेम पासवर्ड चाहिए एक्सेस करने के लिए माई एसक्यूएल को। ओके, सो दिस इज मैं मेरे केस में उसका नाम यूजर नाम एडमिन। ओके, यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड, हियर यू हैव टू मेंशन योर पासवर्ड, माई एसक्यूएल का पासवर्ड चाहिए आपको।
Okay, so in my case, the password is password itself. And okay, so this is the driver, like which driver you want to use. So कौन सा driver आप यूज कर सकते हो? my case में अपन mysql.cj.jdbc driver use करना चाहते हैं. Simple. Let's copy it, paste it over here. Okay, and the last one is DDL auto updatable. Like DDL कैसा चाहते हो आप अपडेटेबल? लाइक अगर आपकी टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब है ही नहीं उसके स्टूडेंट्स टेबल, तो इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट, मतलब आपका डेटाबेस हमेशा अपडेटेबल रहेगा. ओके, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है क्रिएटेड का, कि आप क्रिएट लिख सकते हो. यहाँ पे अगर क्रिएट लिखते हो देन इट विल, जब भी ये रन होगा तो इट विल क्रिएट अ न्यू टेबल. तो वो रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए अपडेटेबल हमेशा हर जगह अपडेटेबल ही यूज होता है. ओके, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अवर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल. तो ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल की कॉन्फ़िगरेशन थी. ओके, सिंपल. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ कंट्रोलर फर्स्ट, क्योंकि अपन को एपीआई बनाना है तो उसके लिए फर्स्ट नीड टू डिफाइन द कंट्रोलर, क्योंकि जब भी अपन रिक्वेस्ट क्लाइंट से मारेंगे तो कंट्रोलर में ही आता है. इन कंट्रोलर पर डिसाइड की कौन सी एपीआई रन होगी. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ कंट्रोलर. गो टू द आईडी एंड राइट क्लिक, क्रिएट अ क्लास which is student controller, and you have to define the package here like controller. Package name हम always in small letter. Okay, yes, this is the controller. Okay, inside it student dot controller. So we need to annotate with controller because this it is our controller. Also annotate with rest controller. Okay, so you have to annotate with a rest controller, not controller. Okay, remove it. Okay, so let's create a API. So first of all you have to define कि किस टाइप का मेथड, किस टाइप की रिक्वेस्ट आएगी. सो हियर वी नीड, अपन ने देखा था कि किस टाइप के मेथड होते हैं. लाइक पहले एपीआई अपनी कैसी है, आई वांट क्रिएट, मतलब डेटा इंसर्ट करने की. सो क्रिएट, क्रिएट के लिए क्या यूज करते हैं, पोस्ट. ओके, सो दिस इज द पोस्ट मेथड. सो लेट्स पोस्ट मैपिंग, यू हैव टू डिफाइन हियर पोस्ट मैपिंग. ओके, एंड यू हैव टू, व्हाट इज द पाथ, लाइक अपन ने बात की थी एंड पॉइंट की. सो दिस इज नथिंग बट अ पाथ. तो एक पाथ क्या होगा आपका. सो लेट्स ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट. ओके, तो ये बेसिकली पाथ होगा. मेथड नेम इज आल्सो add student. Okay, and okay, it will return कि insert किया करेगा, जो डेटा इंसर्ट करेगा वो सेम रिटर्न भी कर देगा इंसर्ट करने के बाद. तो एज ऑफ नाउ के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि एंटिटी रिटर्न कर सकते हैं, जो एंटिटी अपने पास आएगी. तो एंटिटी क्या है, अपनी स्टूडेंट्स है. स्टूडेंट्स का डेटा आएगा ना, दिस इज अपना स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे अपना आएगा स्टूडेंट्स एंड नॉट. दिस इज बेसिकली स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट एंटिटी का ऑब्जेक्ट आएगा, स्टूडेंट का डेटा आएगा. एंड अपन सेव करेंगे, देन आई विल रिटर्न दिस स्टूडेंट्स की भाई आपका डेटा इंसर्ट हो चुका है. ओके, ओके, सो लेट्स क्रिएट अ सर्विस फॉर इट, बिकॉज ये सर्विस को कॉल करेगा, देन सर्विस विल insert the data using the repository to create a repository. So before creating the service, let's create a repository. Okay, let's right click it. I need to create the interface. Okay, because CRUD operation को implement करेगा. So what is the, like, student repo, student repo. Okay, and the package name is repo z3. Okay, finish it. This is our interface. Let's annotate with it repository because it's our repository. And this student repo extend the JPA repository, क्योंकि अपन ने JPA यूज कर रहे हैं अपन,
and I have already added the form.xml में अपन ने dependency add की हुई है string data JPA की. So it will some provide the extra features like model query. तो अपन को extra effort मारने की जरूरत नहीं पड़ती. It will automatically provide some like अपन insert करना चाहते हैं then we just call the same method and by passing the entity so it will automatically save. So अपनी entity क्या होगी like table का नाम क्या होगा you have to specify the entity name student. Okay, this is our student. So what is the ID? ID अपने केस में integer ही है. Okay, so अपन को उतना टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं. ओके सो दिस इज सिंपली क्रिएटेड बाय स्टूडेंट रेपो. इस पे सभी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे लाइक सेव ऑपरेशन एंड डिलीट गेट अपडेट ऑल द ऑपरेशन परफॉर्म विद दिस रेपोजिटरी. लेट्स सेव इट एंड लेट्स क्रिएट अ सर्विस स्टूडेंट सर्विस. क्लिक एंड क्लास. दिस इज स्टूडेंट सर्विस. ओके एंड लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट कॉल एज सर्विस. दिस इज सर्विस मेथड. सर्विस पैकेज के अंदर अपना स्टूडेंट सर्विस. लेट्स एनोटेट विद इट सर्विस बिकॉज दिस इज अवर सर्विस. तो स्ट्रिंग को बताना पड़ता है कि भाई दिस इज अवर सर्विस एंड लेट्स क्रिएट अ मेथड public and it will return a entity because it saved the entity into a database by calling the student repo method and then it will return to the controller and controller will return it entity into a client side. Okay, student student and add students. add student इसका नाम भी and it will take as an argument में student का ऑब्जेक्ट ही लेगा. Okay, entity. Okay, and student. Now here I need to call the method repository का method call करना पड़ेगा while saving this. So just save this. So I am saving this. Return. First I need to ऑब्जेक्ट चाहिए अपन को काय का दिस स्टूडेंट रेपो का ऑब्जेक्ट अपन को यहाँ पे चाहिए सर्विस मेथड. तभी तो अपन कॉल कर पाएंगे उसका मेथड. सो जस्ट फॉर दिस वी यूज द ऑटो वायर्ड एनोटेशन. ओके ऑटो वायर्ड प्राइवेट तो एट द रन टाइम पे ऑटोमेटिक इंजेक्ट कर देगा. ओके स्टूडेंट रेपो student repo. Okay, this is auto wired and while calling student repo dot save, this is same method. This is by default provided by the JPA. Okay, so अगर अपन इसको entity देंगे then it will automatically save this entity. Like कोई भी student का data देंगे it will save and then return it. ये return करता है इसी student को return करेगा and this is how I want. ये I want कि students को return भी कर दे. It will return to the controller. Let's come to the controller. Let's first save it this service. Let's come to a controller and here I need to auto wire the service because service के method को अपन call करेंगे. Auto wire student service student service. Okay, and return by calling the student service का this is our student service and dot add student method and by passing this student which is come from the a कहाँ से आ रहा है आपका क्लाइंट साइड से स्टूडेंट आ रहा है एंड आई विल पास इट सर्विस. तो सर्विस ऐड कर देगा. ओके एंड देन रिटर्न द स्टूडेंट. सेम चीज ये भी करेगा while calling this method it will return to the client side. This is how I am creating a create API ki how we can add the student. Okay, so for creating this just create a just show the database. Okay, SQL run it. तो दिस इज अवर स्कीमा डेमो. ओके अपन ने डेटा सोर्स का नाम डिफाइन किया था तो अपन डेमो के अंदर अपने टेबल में केवल अभी एक ही टेबल है एम्प्लॉयज नाम की एंड दिस प्रोग्राम विल रन. जैसे ये प्रोग्राम रन होगा इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द स्टूडेंट्स टेबल. ओके
जो कि अपन ने अपनी प्रॉपर्टीज फाइल में देखा था। ओके, ये अपन ने कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन की थी। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो कम टू दिस एप्लीकेशन मेन फाइल में and then run this into tab. ओके, सो यू कैन सी इट इज सक्सेसफुली रनिंग ऑन द पोर्ट ऑफ 8082, जो कि अपन ने डिफाइन किया था अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में। ओके, सो लेट्स चेक दिस एपीआई। So just go to the Postman. Just Postman is a very good tool for API testing. Okay, ये बहुत ही यूज किया जाता है एपीआई टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन। ओके, सो लेट्स ओके, सो व्हाट इज द रिक्वेस्ट, कैसी है? पोस्ट रिक्वेस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, पोस्ट रिक्वेस्ट है। एंड आई विल व्हाट इज दिस, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो 8082 HTTP :// लोकल होस्ट, बिकॉज अपना पे लोकल होस्ट है एंड पोर्ट नंबर इज दिस। अपन ने यहाँ पे इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब आई नीड टू डिफाइन द एंड पॉइंट। सो अपन ने कंट्रोलर में एंड पॉइंट क्या डिफाइन के रखा है कि अगर अपन कंट्रोलर में अगर आए, देन यू कैन सी द एंड पॉइंट इज दिस, एड स्टूडेंट। तो अपना एंड पॉइंट ए हो जाएगा कि भाई अगर एक एंड पॉइंट आएगा देन दिस मेथड विल रन एड स्टूडेंट। बट ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको स्टूडेंट की एंटिटी भेजनी पड़ेगी, वहां से स्टूडेंट का डेटा आप भेजना ही पड़ेगा। ओके, लेट्स कम हियर एंड here define this is add student. Okay, so this is our end point, this is our URL हो गया and I need to pass the data, student का data pass करना पड़ेगा। so come to this body section, raw json data I want to send। okay, पहला अपनी है आईडी, और को आईडी भेजना पड़ेगा लाइक 1। ओके, एंड सेकंड इज नेम। ओके, नेम लेट्स से राहुल। ओके, मिसिंग है। एंड एज, एज क्या होगी? लेट्स से 23। एंड लास्ट वन इज अवर डिपार्टमेंट, तो डीपीटी। सो ये एंटिटी और ये जो आर्गुमेंट आ रहा है ना, लाइक आईडी नेम एंड एज, तो एंटिटी में जो जैसे है वैसे ही सेम नेम होना चाहिए, अदरवाइज डेटा नल जाएगा फिर। ओके, तो ये मेक श्योर कि यहाँ पे मिसमैच नहीं होना चाहिए, एंटिटी में जो नेम है और जो यहाँ पे नेम, लाइक डिपार्टमेंट इज CSE। ओके, एंड लेट्स फायर दिस URL एंड यू कैन सी दिस विल रिटर्न दिस। अपन ने एपीआई में देखा था कि ये एंटिटी लेगा देन सेव इट एंड देन रिटर्न कर देगा। ओके, लेट्स रिफ्रेश अवर डेटाबेस कि देखते हैं अपन स्टूडेंट्स फर्स्ट तो की डेटा क्रिएट हुई है, टेबल क्रिएट हुई है कि नहीं। ओके, रिफ्रेश ऑल, यू कैन सी दैट स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गई है एंड इनसाइड इट यू कैन सी द डेटा इज, डेटा भी आ चुका है लाइक आईडी 23 CSE एंड राव, जो अपन ने भी सेंड किया है पोस्टमैन से। ओके, दिस विल रन परफेक्टली। सो ये आपका होगा क्रिएट ऑपरेशन। ओके, let's create a another one which show all the data। so for this I am creating a service। so first of all you need to create the service, so you don't need to create another service। ये स्टूडेंट की सर्विस में ही आप पूरे स्टूडेंट की सर्विस कर सकते हो। ओके, so what it will return, it will return the list of students because I want all the students entity। ये list of students जाएंगे। ओके, here you can get all students एंड इट विल डोंट टेक एनीथिंग, तो ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा एंड इट जस्ट कॉल अपन करेंगे एंड इट विल गिव रिटर्न द ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, सो जेपीए ने एक मेथड दिया रखा है, तो अगर अपन स्टूडेंट रेपो में जाके डॉट करके देखेंगे तो यहाँ फाइंड ऑन, तो इट विल रिटर्न द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। इट इज रिटर्निंग a list of students, so it will automatically return the list of students। so we don't need to do anything because JPA provide the model query automatically run करेगा and पूरे students लेके आएगा and it will return automatically। okay, so this is the main profit or main advantage of
JPA का यूज करने का। ओके, लेट्स कम टू द कंट्रोलर एंड यहाँ पे आपकी गेट रिक्वेस्ट होगी, गेट मैपिंग, व्हाट इज द URL, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट होगा गेट स्टूडेंट्स, because I'm having the all the students, create a public, will return the list of students and get all students. Okay, and just return the by calling this service के मेथड को service dot get all students, ये अपना सर्विस का मेथड है and will automatically return the all the students. ओके, तो अभी तो अपने डेटाबेस में केवल एक ही स्टूडेंट है, दिस वन, राहुल। तो आई एम एडिंग, एक दो और ऐड कर लेते हैं, जस्ट ऐड another id will be a unique because id unique होनी चाहिए, otherwise it will give the error, तो id हमेशा यूनिक होनी चाहिए। let's see the अमन 22 and CSU के डिपार्टमेंट लिया सेम। okay, so it will also added successfully। I want to add one more, एक 3 Ars and 22 and CSU। okay, let's fire it। so अपने 3 रिकॉर्ड आ चुके होंगे डेटाबेस में। okay, देखते हैं, लेट्स सी। तो आप देख सकते हो कि 3 रिकॉर्ड आ गए हैं, हर्ष, अमन एंड राहुल। एंड आई वांट टू कॉल दिस एपीआई जो अपन को सभी स्टूडेंट का डेटा शो करेगी। ओके, सो जस्ट कॉल दिस, जस्ट चेंज दिस, ऐड स्टूडेंट से आपका क्या हो जाएगा, गेट स्टूडेंट हो जाएगा, गेट स्टूडेंट्स। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि यही है आपका एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट विल बी अ गेट स्टूडेंट्स। ओके, मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डेटा देगा ही नहीं, एंड द मेथड शुड बी अ गेट। लेट्स फायर इट। ओके, सो नॉट फाउंड। Okay, let's copy this URL, go to here, okay, and let's fire it. Okay, it is giving something not found। okay, so URL mismatch हो रहा है I think, so just copy this get student, let's run it again। okay, save नहीं हुआ है। okay, okay, ये save नहीं हुआ था। okay, that's why I'm getting error। now if I fire it then it will perfectly run and you can see the data has been come, like पूरा डेटा आ रहा है, राहुल, हर्ष एंड अमन जितने भी रिकॉर्ड हैं। ओके, दिस इज बेसिकली अ गेट ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन, कि अपन पूरा डेटा रीड कर रहे हैं। थ्रेड में आपका क्रिएट एंड रीड खत्म, देन आई वांट द पुट, मतलब अपडेट करने का। सो बेसिकली स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि पुट यूज करें, बट इंडस्ट्री में कोई पुट यूज करता नहीं है, पुट मेथड। इफ यू वांट टू यूज देन यू कैन कर सकते हो आप, पर वी विल सिंपली यूज द पोस्ट मेथड। ओके, फॉर दिस पोस्ट मैपिंग, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं अपडेट स्टूडेंट्स। ओके, पब्लिक, तो स्टूडेंट ही रिटर्न कर देगा जो आपका अपडेट हुआ होगा, स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट, दिस इज अवर मेथड नेम एंड इट विल टेक अ स्टूडेंट, जो नया अपडेटेड स्टूडेंट है वो लेगा एज एन आर्गुमेंट। सो रिक्वेस्ट बॉडी में अपन इसको रिसीव कर लेंगे ताकि अपने स्टूडेंट पे पूरा डेटा आ जाएगा। ओके, एंड देन आई वांट टू अपडेट करना चाहते हैं इस स्टूडेंट को। ओके, सो लेट्स गो टू सर्विस, पहले अपन को सर्विस क्रिएट करनी है जो अपडेट करेगी। दिस इज पब्लिक, रिटर्न स्टूडेंट्स, अपडेट स्टूडेंट। ओके, एंड आई वांट टू कॉल दिस मेथड, कि स्टूडेंट रेपो के अंदर एक मेथड होता है विच विल फाइंड बेस्ड ऑन द आईडी। सो आप अपने पास आईडी है, क्योंकि स्टूडेंट अपने पास एज एन आर्गुमेंट में आएगा, जो नया स्टूडेंट जो अपडेटेड है ना। ओके, तो आईडी विल बी द सेम, तो अपन सबसे पहले आईडी के बेस पे फाइंड कर लें कि डेटाबेस में वो रिकॉर्ड है कि नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ओके, बेसिकली स्टूडेंट, अपन ने रेफरेंस बनाया एंड देन
कॉल द repository मेथड। तो स्टूडेंट रेपो के अंदर डॉट, अगर आप देखोगे तो फाइंड बाय आईडी, दिस इज द बिल्ट इन मेथड। तो इट इज प्रोवाइड क्या कर किया है इसने, इसने प्रोवाइड किया है आपको, जेपीए ने प्रोवाइड किया है तो गेट बाय आईडी। ओके, दिस इज फाइंड बाय आईडी, दिस वन। तो आई विल कॉल दिस फाइंड बाय आईडी। तो आईडी के बेस पे अपन को वो रिकॉर्ड ला के दे देगा। तो आई विल, अपने पास आईडी कहाँ है, इस स्टूडेंट्स में वो आईडी होगी सेम। तो आई विल पास स्टूडेंट्स डॉट गेट आईडी, it will automatically pass the id and it will return the this method. What is this saying? Okay, so it will return the optional, so we need to, okay, so we need to cast, अपन को इसको कास्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शनल रिटर्न करता है। ओके, ओके, तो अपन इसको ऑप्शनल में ही लेते हैं। ओके, तो ये ऑप्शनल डॉट स्टूडेंट्स, इट विल रिटर्न अ ऑप्शनल। ओके, एंड देन आई वांट की डेटा अपन ऐड करना चाहते हो, आईडी विल बी सेम और ऑल द डेटा आई वांट टू अपडेट, लाइक नेम अपडेट करना चाहते हैं और एज अपडेट और डिपार्टमेंट अपडेट करना चाहते हैं। ओके, तो जो स्टूडेंट्स में आया है वो डेटा अपन सेट करना चाहते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो स्टूडेंट रहेगा, दिस वन स्टूडेंट डॉट सेट, इसमें अपन सेट करेंगे, विल नॉट रिटर्न द सेट यार। तो जस्ट टेक इट एज एन ऑप्शनल में लेंगे, देन स्टूडेंट्स स्टूडेंट स्टूडेंट। ओके, तो इसमें अपन रिसीव कर लेंगे ये जो अपन ने स्टूडेंट बनाया है ना, दिस वन ऑप्शनल, दिस इज ए वाला, एंड इट विल गिव द स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे देगा, लाइक डॉट गेट, गेट मेथड होता है इसका। ओके, so it will return the get। तो ये सेम हो गया। ओके, so इसको स्टूडेंट बन रखते हो एज ऑफ नाउ। दिस इज बेसिकली गिव द स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया। देन आई वांट टू सेट दिस डेटा, जो अपन के पास डेटा आया है वो अपन सेव करना चाहते हैं इस स्टूडेंट्स में। दिस इज, एक काम करते हैं, इसको लेते हैं अपडेटेड स्टूडेंट, उसका नेमिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। ओके, अपडेटेड स्टूडेंट, तो अपडेटेड स्टूडेंट की अपन आईडी लेंगे, देन फाइंड करेंगे तो वो अपन को दे देगा कि जो स्टूडेंट पूरा आया उसका डेटा। देन आई वांट टू सेट दिस, इस वाले डेटा में अपन ने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लिया, एंड आई वांट टू सेव दिस डेटा की अपडेटेड डेटा, अपडेटेड स्टूडेंट के डेटा अपन को इस स्टूडेंट में एग्जिस्टिंग, तो स्टूडेंट डॉट सेट
एज, एज कैसे लेंगे, जो अपडेटेड आई है वो अपन को सेव करना है, तो अपडेटेड स्टूडेंट डॉट गेट एज। ओके, सेम एज स्टूडेंट डॉट सेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भी अपन ऐड करेंगे। ओके, अपडेटेड स्टूडेंट डॉट गेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आएगा वो इसमें आ जाएगा। ओके, देन स्टूडेंट डॉट सेट नेम। ओके, अपडेटेड स्टूडेंट डॉट सेट गेट नेम। ओके, तो ये नेम भी अपडेट हो जाएगा। देन अपन को इसको सेव करना है और रिटर्न भी करना है। देन रिटर्न, सेव, और सेव करने के बाद ये रिटर्न ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा दिस स्टूडेंट, जो अपडेटेड स्टूडेंट है उसको। ओके, सो जस्ट स्टूडेंट रेपो। ओके, स्टूडेंट रेपो होगा, सो स्टूडेंट रेपो डॉट सेव एंड वाज दिस अपडेटेड स्टूडेंट, दिस वाला, ये वाला अपडेटेड है। ओके, एंड इट विल रिटर्न ऑटोमेटिकली एंड जस्ट सेव इट, गो टू अ कंट्रोलर पार्ट एंड अगर यहाँ से आपको कॉल करना होगा जो अपन ने अभी मेथड बनाया है, स्टूडेंट सर्विस डॉट अपडेट स्टूडेंट। ओके, बाय पासिंग दिस न्यू स्टूडेंट का जो डेटा आया। ओके, सो दिस इज अपना अपडेट हो गया। लेट्स चेक इट। ओके, सो आई एम अपडेटिंग दिस डेटा, जस्ट कॉपी इट and come to here and this is our post request, not, and यहाँ आपका जो URL होगा होगा अपडेट स्टूडेंट का, अपडेट स्टूडेंट। ओके, दिस इज अपडेट स्टूडेंट। ओके, सो आई वांट टू गिव दिस डेटा एंड राहुल के डेटा को अपन चेंज करना चाहते हैं, लाइक अपन डिपार्टमेंट इसका चेंज करके करना चाहते हैं IT। ओके, तो दिस इज IT, द ID विल बी ए सेम। ओके, तो इस ID के बेस पे वो फाइंड करेगा, देन अपडेट कर देगा कि भाई डिपार्टमेंट आपका क्या है। So, okay, this simple and let's fire it and you can see it will pass this, तो ये सेव हो गया है, then it will return it। Let's check it and refresh it and you can see राहुल का अगर डिपार्टमेंट देखें तो पहले CSE था, now it's updated which this is IT, तो अपडेट हो चुका है। ओके, तो दिस वे यू कैन अपडेट। ओके, सो बेसिकली इंडस्ट्री में ऐसे ही अपडेट किया जाता है, पुट कोई यूज करता नहीं है बेसिकली। ओके, एंड लेट्स सी द अनदर वन विच इज डिलीट। ओके, सो इट अ गेट रिक्वेस्ट, डिलीट क्या होगी, गेट रिक्वेस्ट ही होगी। अगर आपने यहाँ देखी होगी, तो डिलीट भी कोई यूज करता नहीं है, आप यहाँ चाहो तो स्पेसिफाई कर सकते हो, बट हमेशा गेट मैपिंग ही यूज होती है। ओके, विल टेक अ पाथ, डिलीट, ये आपका मेनली एंड पॉइंट होगा एंड आपको यहाँ पे लेना पड़ेगी ID कि किस स्टूडेंट को आप डिलीट करना चाहते हो, उसकी ID। ओके, सो वी नीड टू पास द ID इन URL। ओके, सो इट विल टेक अ URL, ये वाला URL आएगा आपका लोकल होस्ट स्लैश पोर्ट एंड डिलीट स्टूडेंट एंड स्लैश ID आएगी एंड आई विल टेक इट एज एन ID। तो नेम इज, इसका नेम आपका रहेगा डिलीट स्टूडेंट एंड रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। ओके, तो अगर डिलीट कर देगा देन इट विल रिटर्न द बुल ट्रू, अगर नहीं कर पाएगा देन इट विल रिटर्न द फॉल्स। सिंपल। ओके, तो जस्ट रिक्वेस्ट बॉडी नॉट पाथ वेरिएबल, तो अपन को पाथ वेरिएबल में ये लेना पड़ेगा। ओके, पाथ वेरिएबल ID इंटीजर आई इंट ID। तो ये वाली आपकी ID पाथ वेरिएबल में आ जाएगी। ओके, देन इस ID को अपन को डिलीट, इस ID के बेस पे अपन को डिलीट करना है, सो लेट्स क्रिएट अ सर्विस जो डिलीट करेगा। ओके, कम टू अ सर्विस पार्ट एंड let's create a service for delete the student, so it will just return a boolean कि भाई अब डिलीट हुआ कि नहीं, नेम इज सेम डिलीट स्टूडेंट, इट विल टेक इंटीजर ID लेगा, इट विल फाइंड इनटू डेटाबेस एंड डिलीट इट। सो देखते हैं कि JPS के लिए भी कोई क्वेरी देता है कि नहीं। ओके, सो रिटर्न, लेट्स टेक इट कि
जो आपकी स्टूडेंट रेपो है, ओके, स्टूडेंट रेपो डॉट फाइंड, कुछ डिलीट करने का है, ओके, तो डिलीट, डिलीट बाय आईडी, ओके, सो दिस इज द मेथड डिलीट बाय आईडी। तो इट विल जस्ट डिलीट द मैथ, डिलीट, ये डिलीट कर देता है, तो डिलीट कर देगा ये। इट विल टेक एज आईडी, आईडी लेगा एंड उस आईडी वाले डेटा को डिलीट कर देगा फ्रॉम द डेटाबेस। इट इज बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडेड बाय द जेपीए के द्वारा ये प्रोवाइड की जाती है, ओके। So here you need to pass the ID, okay, and then it will, just don't return anything, just return the true here, okay। It will confirm है कि ये delete कर देगा and after that you can pass the true here, okay। It will don't return anything, like if I want integer return करता है क्या है, integer answer is equal to, it will don't return anything, cannot convert a void to int, okay। void इसकी return type कुछ होती नहीं, we don't need receive anything, okay। So it will return just true, it delete कर देगा and just return true। Let's save it and come to controller part and let's call this service method। So return student service dot student, delete student based on the id, so I will pass the id and it will delete from the database, okay, and return true or false, okay। if delete अगर successful हो जाता है then it will return the true, otherwise it will return the false। So let's submit and let's I want to delete it। so यहाँ पे अपन चाह रहे हैं राहुल को डिलीट करना जिसकी आईडी है वन, सो आई नीड टू पास द वन फ्रॉम हियर, तो जस्ट इट इज जस्ट अ गेट रिक्वेस्ट एंड आपका जो यूआरएल रहेगा वो क्या रहेगा, डिलीट, ओके। लेट्स कॉपी दिस, क्रिएट अनदर, पेस्ट हियर एंड डिलीट स्टूडेंट एंड बेस्ड ऑन आईडी, सो आईडी इज वन, ओके। दिस इज स्टैंडर्ड यू हैव टू फॉलो, जब भी आप कोई चीज आईडी की बेस पे डिलीट करो तो आपको वहां से यहाँ से ही पास करना पड़ता है, और रिक्वेस्ट शुड बी अ गेट। बाकी आप पोस्ट भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, बट गेट स्टैंडर्ड है, यू हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड व्हेन यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, ओके। जस्ट एंड इट, तो इट विल डिलीट द राहुल का डेटा, डिलीट कर देगा कि आईडी राहुल की है, ओके। तो इट विल रिटर्न ट्रू, दैट मीन्स कि आपका जो राहुल वाला डेटा है वो डिलीट हो चुका है। लेट्स रिप्लेस इट एंड यू कैन सी the data of Rahul has been deleted successfully, okay, simple। So this is simple CRUD operation, so I have deleted, I have performed all the operation like create, this is अपना create which is add the data from the database, this is अपना get which is basically a read operation कि आप पूरा data ले रहे हो, okay, and update, आप update भी कर सकते हो, then आप delete भी कर सकते हो। this is आपके चारों CRUD operation successfully, okay। and this is basically a industry standard, we follow the MVC pattern की particular भाई अपन ने repository बनाई है, service बनाई है, okay। so this is all about the CRUD operations, so in this way you can create the CRUD operations, okay। so this is simple, okay। so अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, please like and subscribe and press the bell icon for more videos, thank you।